आमर आधुनिक संस्कृति निश्चित भाव में हरप्पा संस्कृति आनीत वी पीपल नाउ डेज वी आर राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट देयर राइटिंग वाज मेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दे वेर द नेचर वर्शिपर से माने प्रकृतिर उपासक थिले। Dear students, welcome to Art Square. Myself, Professor Lalitendu of History, and today we will discuss the remaining part of Harappan culture. And we know that we have completed almost all the features of Harappan culture, and these are the remaining part which are to be discussed today. These were sales, Indus script, religion, burials, and the end part of Harappan Civilization. Today we will discuss only these features which was uncovered. You might have waited for this. I am already got several comments. Those who were awaiting to read all these chapters, thank you all. And you have cooperated a lot for our video classes. Today we will start the seals. And in the previous class we have already studied about the archaeological source, and this archaeological source we have narrated about the seals which were unearthed, and the historians discovered these seals, and by which the Harappan culture could be found out. These seals were the most informative, and these seals tells us regarding the Harappan culture, and what about the things they were associated about that we are going to discuss. The seals were particularly of terracotta, stone seals, soft seals. The seals were divided into three parts. Number one, stone seals, terracotta seals, and soft seals. So what are these seals? Seals are made by the Harappans, and they made it for their own purposes. But these seals became vital part for us to know about the Harappan culture. These seals, these are found in Mohenjo-daro and Harappa. And in these two places, more seals were discovered. The stone seals were discovered in Mohenjo-daro, and soft seals, particularly the stones which are steatite stones, which are very soft, these are discovered in Harappa. So these seals tells us many things about the Harappan culture, and particularly the seals are depicting the various pictures. And if we discuss the Mohenjo-daro stone seals, we can have the picture of Pasupati. What is Pasupati? What does it mean? Pasupati means the Harappan religious belief. How the Harappans, they were worshipping their god and goddesses. And Pasupati is said to be called as the male god. And it is quite compared with our Maheshwar, Lord Shiva, Pasupati or Jantupati. And in this seal, we can have the clear vision or a clear picture about how the three-headed male god is sitting, and around him there were several animals. The animals like elephant, horse, bulls, goats, like this. And many more small creatures are there.
So these seals tells us how the Harapans were believing their god and goddesses. So these stone seals of Mohenjo-daro tells us the belief of Harappan culture, and these seals depict the picture of Pasupati, and sometimes the seals were on various animals like horse, elephant, goats, etc. And the Harappan soft stone, the stone on sitite is a stone, and this is very soft in nature, and this is a seals which that was a horse with horn, a horse with horn. This is a picture, they drew picture on these seals, and which tells us about the religious belief of the people of Harappan. And again, the terracotta seals are there. These seals, they made various pictures, birds, animals, and female figures, male figures, and these figures is associated with completely religious nature of Harappan age. So these are the seals are very informative, by which the historians know everything about the religious belief of Harappan. And we say to say that if there would not have been the seals, we cannot get the correct information of religious belief of Harappans. The seals are very informative. तेणु ये पिला माने वो ओडिया पिला को भी कहूचे, कारण ओडिया पिला माने बहुत हमको कहते ओडिया रे भी कहया पाई एई सील्स विषय रे हमें कहबा जे सील्स होचे बा ओडिया रे हमें ता कहबा मोहर। हरप्पार लोक माने एई मोहर को व्यवहार करुथिले, ए मोहर को तैयारी करुथिले। ए जो मोहर तीन प्रकार थिला, पत्थर स्टोन जोटा कि हार्ड बा ओजनिया पत्थर बा दार ओजन थिबो हार्ड स्टोन, एवं टेराकोटा माटीर सील बा मोहर एवं अति सूक्ष्म पत्थर रे तैयारी हेतिला मोहर गुडिक, एवं सेही पत्थर गुडिक हेतिला स्टिटाइड पत्थर रे। एवं एई प्रकार ए तीन प्रकार मोहर हरप्पा संस्कृति मध्य रे सीमित थिला। एई मोहर गुडिक थिला बहुत सूचना ऊपर आधारित, एवं एई मोहर जोगु आमे जानि पारुचे जे हरप्पा संस्कृतिर धार्मिक तत्व कौन थिला, माने किपरि विश्वास करथिले सेमानकर धर्म को। एवं ए मोहर रे विभिन्न प्रकार चित्र थिला। आमे जदि कथा हवा मोहनजोदारो रे जो स्टोन बा जो मोहर बाहरी थिला माटी तळु आविष्कृत होइथिला, से कहा ऊपर चित्र कराइथिला पशुपतिकर चित्र, पशु मानकर पति बा जंतु पति। एवं सेही पशुपति तीन मुंड विशिष्ट गोटे स्थान रे पद्म आसन रे बसथिले, एवं तांको चारिपटे हाथी, बाघ, घोड़ा, छेली एवं अनेक प्रकार पशुंकर समाहार रे से बसथिले। एईटा हमकु जणै दउचे जे हरप्पार लोक माने केवल भगवान को विश्वास करू नथिले, पशु मान को मध्य विश्वास करुले, पूजा भी करुले। जेमती आजिका डेट रे आमे गाय की पूजा करुचे, तेणु आज आमे आधुनिक जुग रे जेमती पशु को पूजा करुचे, सेमती प्राक ऐतिहासिक समय रे हरप्पा संस्कृति समय रे से माने पशु को मध्य पूजा करुले। तेणु ये जो पशु पूजन, से पशु पूजनटा आमर हरप्पा संस्कृति आज आधुनिक जुग रे मध्य पहुँची। तेणु आमे निसंदेह रे कहि परिबा जे आमर आधुनिक संस्कृति निश्चित भाव में हरप्पा संस्कृति आनीत। मॉडर्न सिविलाइजेशन आज कंप्लीटली डिराइव्ड फ्रॉम हरप्पन कल्चर। तेणु ये जो मोहर एथिरे पशुपति बा आज आम जहाँ को पशु मान पशुपति जमती पशुपति नेपाल रे शिव आकार रे पूजा पाउचंती, आमर जमती भुवनेश्वर रे महाप्रभु लिंगराज शिव आकार रे पूजा पाउचंती, नेपाल रे पशुपति शिव को कह जाए। तेणु जंतु मानकर पति से
हरप्पा संस्कृति समय पशुपति को पूजा करा जाउतला जोटा कि हमर एई मोहरु आमे जानुचे तापरे हरप्पारे जो सॉफ्ट स्टोन जोटा कि आमे अति सूक्ष्म पत्थर रे स्ट्रीटाइट पत्थर रे जो मोहर तैयारी हेतिला सेतिरे थिला घोड़ार गोटे घोड़ा दी पटे दीटा सिंह थिला ताकू चित्रित आकार रे चित्रण करा जाइतिला प्रत्येक पशु माने अपेक्षा घोड़ा होचे सबुठु द्रुत सेमती तांकर सभ्यता को द्रुत गति रे आगे न पाई से माने घोड़ा को प्रतिनिधित्व करुथिले तापरे आमे देखिबा टेराकोटा जो माटीर जो मोहर से माटीर मोहरु से माने विभिन्न प्रकार डांसिंग गर्ल बा नाचुथिबा कन्या मानकर चित्र मोहर तैयारी करा जाइछि तापरे बहु मान देवादेवींकर चित्र भी करा जाइछि एवं एथिरु आमे जानुछु माटीर देवता देवती को से माने मध्य पूजा करुथिले तेणु ये जो सीलटा होची संपूर्ण भाव में से मानकर रिलीजियन बा तांकर धर्म उपरे आधारित ए सील बा मोहर जोगु आमे जानि परिबा क्लियरली हाउ फार द हरपन पीपल वेर बिलीवर ऑफ ऑलमाइटी पावर बा अनसीन पावर से माने अदृश्य शक्ति को से माने केते परिमाण रे से माने विश्वास करथिले तेणु से माने विश्वास करथिले इफ वी आर सो डेवलप्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नॉट बाय आवर स्किल से माने विश्वास करथिले जदि आमे एते प्रगति हेइचु सेटा हमरो दक्षता जोगु नुहे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भगवान को आशीर्वाद सो व्हाटएवर दे वर थिंकिंग व्हाटएवर दे वर गोइंग टू डू दिस वर द नेम ऑफ गॉड एवं एतिकी सहित मध्य से माने नेचर को मध्य विश्वास करथिले एवं नेचर कारण तांकर सभ्यता मु पूर्व क्लास रे भी कहिछि तांकर सभ्यता जदि आज एते डेवलप्ड हेछि ताले बाय ओनली बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर इफ दे वुड नॉट हैव ऑब्जर्व द नेचर दे माइट हैव नॉट स्टार्टेड द ग्रेट सिविलाइजेशन जदि से माने प्रकृति को एते परिमाण रे उपलब्धि न करि थांते ऑब्जर्व न करि थांते ताले से माने एते बड़ सभ्यता गड़ी पारि न थांते सो व्हाटएवर they knew, whatever they used, whatever they developed, they are showed us on the basis of seals. So you can have the clear vision of this seal. And next come to script. We know ourselves, other people know ourselves by our own identity. If you are the student, in which class you are reading, what is your name, what is your phone number, what is your father's name, everything is known from your I card. So your I card tells us what you are. Like this, the Harrappans are known by their script, whatever they wrote about themselves, and by which the historian get the information. But the thing is that the script which they have developed, जो लिपि से माने करिथिले, that is not able to read, ताको पढ़ा जाई पारि नाही आजि पर्यंत, because the people, there is no historian, no scientist, no one cannot read the script. And as per the historian's view and knowledge, this is the script by which is used in Egypt and Sumerians. से माने जो प्रकार लिपि व्यवहार करथिले ठीक से प्रकार लिपि नाइल वैली बा नीलनदी संस्कृतिर आदिवासी बा सुमेरिय माने सेमती लिपि व्यवहार करथिले. So exactly that type of script were used in Egyptian civilization and Sumerian civilization. So according to A.L. Basam, an eminent historian, A.L. Basam, he has written a great book, very important book, The Wonder That Was India. The name of that book is The Wonder That Was India. In his book, he has written the Harrappans are quite equal to that of Sumerians.
So how he came to know that? By script which the Sumerians made, that type of script was used by Harapans. So from this point of view, we can assure that they may be the traditional people of Sumerians. So history is connected with everything. If we go on in the deepest level, we can have the knowledge regarding how the history is written, from which source, everything is clearly. So these 400 signs, and we can have called the pictograph. Pictograph means the pictures. The picture represent on particular things. जेमती आमे कहले गोटे मोहरे आमे देखिले पशुपति बा जड़े लोक तांकर तीनटा मुंड अच्छी एवं चारिपटे जंतु माने बसचंती हाँ बा पशु माने बसचंती हाँ तेणु आमे जानिले कौन ही माइट बी ए गॉड सी जड़े भगवान बा देवता ही पारंती जार तीनटा मुंड तेणु सेमती सेही पिक्चर रु हरप्पावासी माने जणाउथिले आम मानकु about their lifestyle. Then this script has 400 signs, and all the script were written as if from right to left. We people nowadays were writing from left to right, but their writing was made from right to left, which is called kharoshti, and it may be your 1 mark or fill in the blanks or MCQ question. That is from Kharoshti, 1 mark question. So this is regarding the script which was discovered in Indus Valley Civilization or Harappan culture. So next is religion. The religion is the most outstanding topic of Harappan age. The Harappans, before their settlement at the Indus Valley, सिंधु नदी कूलरे बसवास करिबा दिनठू they had showed their sign about how religious in mind, because first of all they were the nature worshipper. से माने प्रकृति रो उपासक थिले, से माने प्रकृति को बेसी मानुथिले, because nature taught them everything in their life. कारण प्रकृति तांको तांको जीवन रो सबु किछि जणैतिला, by which way they will lead their life, that was taught by the nature. First of all, they were the nature worshipper. Nature को सेमाने पूजा करुथिले. From the part of nature, they started developing how to be more religious instead of worshipping the nature. That is, their part of worshipping is Pasupati, Mother Goddess, nature, and animal sacrifice. These 4 type of religion they are acquainted with in their Harappan age. First is Pasupati. Pasupati we have already discussed in the seals chapter, and what we call today Lord Shiva, they were calling that is Pasupati. How their male god is loving to all kind of living beings of at that time. ए जो पशुपति से किपरि समस्त पशु मान को भल पाउतिले एवं पशु मानकर देवता बोली निजको आख्या देइतिले, सेटा हरप्पावासी माने पशुपति को भाव में जणाइछन्ति एवं सेही पशुपति वार्ड को नेपाल गोटे मंदिर अछि, ता कहते पशुपति मंदिर, एवं से पशुपति मंदिर रे भगवान शिव पूजा पाउछन्ति। सेमती पशुपति को से माने निज देवता बोली भाबुतिले। तापर मदर गॉडेस मीन्स द अर्थ, से माने धरित्री को मध्य पूजा करुथिले। कारण मु तुमको पूर्वरु कहिछि व्हेनेवर दे वर टॉट फ्रॉम द नेचर, जेतबेले नेचर से माने जानिले जे वृक्ष किपरि हुए, प्लांटेशन किपरि हुए, ता कोन पाइका हमर एग्रीकल्चर केमिति संभव, हां कोन पानी माटी सूर्य किरण आ द्वारा से माने सेमानकर जीविका निर्वाह करिवे। विदाउट सॉइल दे कैनॉट प्रोड्यूस द कॉर्न इन देयर एग्रीकल्चरल फील्ड। सो तेणु से माने मदर गॉड मातृशक्ति को से माने पूजा करुथिले। मदर गॉड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड टू दैट ऑफ पशुपति। मदर गॉड
मातृशक्ति को पूजा करते ता सहित नेचर बा प्रकृति को पूजा करते बिकॉज नेचर टॉट देम एवरीथिंग बाय मीन्स ऑफ नेचर दे हैव डेवलप्ड ए ग्रेट सिविलाइजेशन इन देयर लाइफ. And next is animal sacrifice to make happy, to get blessings from the mother god and Pasupati. They started the animal sacrifice ba pasu bali hatya in the middle days, in middle age, in between medieval and modern. Medieval मध्य युग एवं आधुनिक युगर मध्यवर्ती समय रे पशु बलि प्रथा थिला एवं गाँ गली रे लोक माने वर्षा पाइका पशु बलि प्रथा प्रचलन करथिले. वर्षा पाई से माने पशु बलि के होउथिले. आज भी वेस्टर्न ओडिशा रे बहुत जगह रे महिषी मान को बलि भी दियंती. एंड दिस इज देयर बिलीफ, दैट इज द ट्रेडिशनल बिलीफ. वी कैनॉट इराडिकेट दिस टाइप ऑफ बिलीफ ऑफ द पीपल. कारण ये गोटे धर्म जो धर्म को लेकिन से संस्कृति से सृष्टि करिसंते. तेणु से एनिमल सैक्रिफाइस जदि आज मॉडर्न एज रे वी आर ऑल एजुकेटेड, वी नो दैट देयर इज नो कनेक्शन ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल टू गेट ए न्यू थिंग. गोटे नूतन जिनस पशु बलि हत्यार कौन आवश्यकता नहीं. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी got the message and we are developed and educated. We know that there is no connection in between the killing of animal to get a new things. So these are the things, but the people of that age, they knew that by means of animal sacrifice we can get more and more crops. आमे बहुत अधिक खाद्य शस्य उत्पादन करि परिबो. जदि वर्षा काल वर्षाटा फसल पाई जरूरी, जदि वर्षा न हुए फसल हब नाही. तेणु ए वर्षा पाई से माने कौन करते पशु बलि प्रथा प्रचलन करते. तेणु ये हूँ बिलीफ, तांकर एटा विश्वास. बोधुए तांकर विश्वास कामयाब हो जाइतिला. तेणु से माने परवर्ती पीढ़ी गोटे पर गोटे ताको विश्वास करी चली थिले. तेणु दिस इज रिलीजन. एवं आउ गोटे सबुठ बड़ कथा हला देयर थॉट, देयर बिलीफ दैट after the death man will take birth. मृत्यु पर मनुष्यर पुनर्जन्म अच्छी. आमे जेमती आज एजुकेटेड है कि मॉडर्न वर्ल्ड रे रही कि आमे भी विश्वास करूचु मोर निज लोक जो माने मरी जाइचंती दे माइट हैव टेकन द बर्थ. से माने आउ कोठी जन्म नहीं सारिचंती. कारण आमर माइथोलॉजी संस्कृति तापरे आमर समस्त पुराण कहूचे मनीष मरीगला मोक्ष प्राप्ति हो जाए. मनीषर कर्म अनुजाई तार पुनर्जन्म हुए अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म. राइट टू कर्म, कर्म अनुसार मनीष फल पाए. द साल्वेशन मोक्ष प्राप्ति कर्म अनुसार हुए. भल काम कले भल पुनर्जन्म मिले, खराब काम कले खराब पुनर्जन्म मिलता है. तेणु से विश्वास से मानकर अच्छी. एवं जेमती इजिप्टियन माने से मानकर डेड बॉडी को मम्मी भाव में रखिकी मम्मी माने पिरामिड रखुले कारण पुनर्बार आ भीतर को लाइफ पशिब जमी लाइफ आसब आम निज लोक पुणी फेरी आसब. दैट वाज देयर बिलीफ. बट द हरपन बिलीव दैट द पर्सन हु इज डेड ही मस्ट बी अलिव. तांकर पुनर्जन्म अच्छी से माने आसीबे. तेणु तांको से माने कौन करते से माने कफिन भितर समाधि दौथिले. एवं बहुत जगह देखा जाइए जे समाधि देला बेले से माने अधा पुतुथिले. कहीं ना व्हेन द लाइफ कम टू देयर बॉडी इट विल बी इजियर टू कम आउट फ्रॉम द अर्थ. माटी भितर से खुशी पलि आस पार. दैट वाज द बिलीफ. से माने गोटे माटी पात्र रे पानी रखुले एवं किसी अलंकार भी रखुले. दैट वाज देयर बिलीफ. तेणु दैट बिलीव्स दैट इज कॉल्ड द बुरियल. से माने किपरि समाधि दौथिले. तेणु एते सत्य एते बड़ सभ्यता माटी भी दिन समय आसिला माटी भी मिसीगला. आमे जानिचे
where there is life there is dead. जीवन जोटे मृत्यु भी सेठी. आज जोटा तैयारी होइछि समय आसीबो काली भी सेटा सरी जीवो. There is nothing is permanent in this materialistic world. आज ए पृथ्वी रे कौन जिनस तिष्ठिके रही पारिनी. मनीष कुह पशु पक्षी जीव जंतु जहाँ अच्छा समस्त शेष अच्छे. where there is rise there is fall. This the great civilization which astonished the world, सारा पृथ्वी को आश्चर्य करिथिला. This civilization was destroyed, declined, disintegrated. And we are very much upset and shocked that it is our prime civilization. यह होची आमर प्रथम सभ्यता भारतर संस्कृति यही सभ्यतार सृष्टि से माने जहाँ जहाँ करथिले आमे ताकू आज से व्यवहार करुचे. तेणु भारतर मूल संस्कृति हरप्पा बा सिंधु सभ्यता कहले अत्युक्ति हेब नाही. तेणु एटी डिक्लाइन उपरे आर पतन उपरे बहु ऐतिहासिक माने विभिन्न मत पोषण करिसंती. फर्स्ट आमे देखिबा हाउ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन was destroyed. Number one is that the Indus people were agricultural minded people. As they were agriculturists, they started a settled life. जेहेतु से माने कृषि उपरे अग्राधिकार देथिले तेणु गोटे जगार से माने स्थायी भाव में बसवास करथिले. एग्रीकल्चर their prime occupation. Without agriculture they didn't have any other occupation. Agriculture becomes possible by means of Indus water. But who can control the nature? प्रकृति को किए नियंत्रण करि परिबो? Nobody. When the Indus people they demanded more and more in agricultural activity, they started the clearing of the forest. For their own settlement, they started clearing the forest. So nature had the negative impact on their lifestyle. The Indus River changed its course. Indus River changed its course means सिंधु नदी तार दिग परिवर्तन कला. कारण आमे बहुत सुनिचे द लोकेशन ऑफ कोणार्क टेम्पल. एंड जदि धर्मपद कथा आमे सुनिबा जे कोणार्क मंदिर मुंडी धर्मपद मारिला तापर समुद्र को डेई पड़ला. तेणु बर्तमान देख कोणार्क मंदिर कोठी समुद्र कोठी. कोणार्क मंदिर कोठी समुद्र कोठी. जदि कहबा आमे यही लोक कथा को आमे विश्वास करिबा जे धर्मपद 12 वर्षर बालक मुंडी मारिकी समुद्र को लंप करके मरीगला ता माने आमको विश्वास करे पड़ो कोणार्क मंदिर समुद्र कूल रही सो दैट धर्मपद कुड जंप टू द सी. किंतु समुद्र 2 किलोमीटर घुंची जाइए जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तेणु सिंधु नदी जेतबले तार दिग परिवर्तन करदेला it becomes impossible for the Indus people to carry water and to water their agricultural field. एते दूररू पानी आनिकी से माने एग्रीकल्चर करिवे केमिति? Agriculture could not be possible. So they might have changed the place. When they change the place, that may be the destruction. जो जगह सिंधु सभ्यता गड़ी उठिला जेतबले सेठी लोक शून्य हो गला. So that was the destruction of civilization. And it may be a cause that when the Indus River changed its course, the civilization destroyed. Which the first information from the historian.
The second information is vigorous earthquake. तुम्हारे टीवी बोरे बहुत तुम देखिथिबो केमतो भूमिकंप द्वारा कौन कौन सब हुए, केते जनबसति नष्ट हो जाए, केते लोक मरी जाते. It is very pathetic. And frequently earthquakes are experienced in these areas of Harappan culture. हरप्पा संस्कृतिर परिपार्श्विक परिवेश रे बहु समय भूमिकंप हुए एवं बोध हुए द अर्थक्वेक destroyed their civilization. That may be a cause. By means of earthquake, by heavy frequency of earthquake, the Indus Valley civilization or Harappan civilization or Mohenjo-daro civilization were completely destroyed. And the historian Max Muller, he is telling that the Indus civilization has not been destroyed by earthquake or the change of course of Indus river. Rather, Indus people were defeated in the hands of Aryans. Then who are Aryans? A nomadic people from Central Asia. They observed that this place is very developed. The people are very skilled. They have constructed everything. So they were attracted to the Indus site, Harappan site and Mohenjo-daro site. And they decided that if we defeat all these people, so this civilization will be ours. So they defeated the Indus people in the battle. But tragedy was that the Indus people were very peace-loving people. They didn't know how to war with others. They were very disciplined. They never expert themselves in the war. So the Aryans, they easily defeated the Indus people. And in that place, the Aryans started their new civilization, what we call Aryan civilization. And later it was divided into two, that is pre-Vedic age and later Vedic age. And when the Aryans, they started their civilization, the lifestyle of Indus and the lifestyle of Aryans were completely different to each other. So these are the things for which the civilization was destroyed. But we cannot say, and what is the exact cause for their destruction? Only one man knows. He is the supernatural soul or the God. But who can say how they destroyed themselves? So dear students, today herewith we completed the Harappan culture. I think you must be liking this class. If you like, so like, comment to our video class, and you must be waiting for the next class, and we'll start a new topic. Since then, goodbye to you all.